So, thank you, team. Manita, welcome to the this Saturday. Hello. Yeah, welcome yes, to the Saturday class of Kalani and Company, where we used to take various topics of the related to the profession, various technical topics, as well as sometimes some other topics too. So I request uh, Sakshi Ragwani to please introduce Manita, and then Manita will be speaking as a keynote speaker for today's session. So Sakshi Ragwani, please introduce Manita. Yes, sir. Sir, am I audible? Yes. Yes, sir. So good afternoon, everyone. I am elated to take opportunity to introduce the esteemed and highly inspirational personality, CM Manita Khurana, who will be joining us as keynote speaker for today's Saturday class. I am Sakshi Ragwani, here on the behalf of Kalani and Company. Profoundly welcome you, ma'am. I would like to point out that she carries a great experience in the area of transfer pricing and handling audit and inspections for various countries and jurisdictions. She is also involved in finalization of ruling before various tax authority up to the appellate level, including High Court and Supreme Court. Thank you so much, ma'am, for giving us your valuable time. Lastly, I would like to request you to please guide us through your word of wisdom. Thank you, ma'am. Thank you, Sakshi, and thank you everyone for being part of this Saturday class. And I would like to thank Bhupendra sir for inviting me to this session. So I started my career with Kalani and Company, and I can understand, even I have attended these Saturday classes right from the very beginning when I started my career, and it has helped me professionally and personally to grow myself. And so I think I should give the entire credit to Kalani for setting up that base, because through these Saturday class sessions we have learned a lot. And back then there were partner session as well, whereby the partner used to address us. So it was amazing, when you get to know the experience from the senior partners, and when then we all come together and discuss about the topics. So thank you so much everyone for inviting me.
So today, the topics which we are covering in this class, so there are three topics which are chapters 7, 8, and 9 of the ICI guidance note. So the first one is on the documentation and verification, and then we have the penalties, and then we have the scope of the report which we prepare under Section 92E of the Income Tax Act. Yeah. As you all have already learned up to so many chapters of this guidance note, so what comes to your mind in the very beginning that what should be the scope of documentation and what should be what is that an entity should prepare and keep? So any guesses from the students? I mean, what comes to your mind as a first point, as a first trigger? That this is what should be maintained by the enterprise who have entered into the transaction, the international transaction. So the floor is yours. Please come up with your answers and suggestions. So basic question is that yeah, so we learned about the arm's length price as well as international transactions, various provisions. So what she's asking is that how the documentation will be prepared. See, ultimately our objective is to establish ourselves before the assessing officers. So what comes first in your mind that yes, this should be the set of documentation for proving ourselves in the transfer pricing documentation. What are the associated parties? Who are the associated parties and what transactions we have entered into with those associated parties? The bank statement, bank passbook. So I think a right guess. Manita, you are able to hear? Yeah, I'm able to hear. Yeah. Yes, sir. So you said bank statement. You said bank statement, right? Someone has said bank statement too. Okay. Okay, so tell me one thing. So what do you see when there are two entities, for example, A and B, and they have entered into an international transaction. So A has dealt with B. For example, we take provision of services. So A has provided services to B. So there is a transaction, right? So for that transaction, what do you think that we should be knowing? We should be knowing about A and about B. So, and there is a service rendition. So, is there anything which is coming to your mind as in that we should know about the nature of service that A has provided to B? Correct? Yeah. Yeah. Are you able to hear what she is saying? सर्विस प्रोवाइड करिए उसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंटेशन या जो प्राइस चार्ज करेंगे रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंटेशन सब मेंटेन करना पड़ेगा तभी अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमने ऑनलाइन प्राइस पे कुछ ट्रांजैक्शन किया है. Anyone else? सर कोई भी ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंटेशन होता है साइन वगैरह का डीड वगैरह होता है वो भी चेक कर सकते हैं. Vanita, your video is actually not clear. If you can just check it, because yeah, now it's okay. Is it clear, sir? Is it better now? अभी थोड़ा एक बार I think चेहरा नहीं आ रहा है. Yeah, now it is clear. But I'm not sure because कहीं ना कहीं आपके मोबाइल पहले ठीक आ रहा था. Okay. Yes, now now it is clear. Okay. But again, I'm not sure because of
maybe you are attending through mobile. Yeah. So, so what I was saying was there are register steps from A to B. So what we will see that there are two entities involved. And what we need to make sure that between these two entities, here there is a transaction, there is a provision of service. So what we will understand first of all is the nature of service. We'll go through the contracts, the agreement in detail as to what is the nature of service. I mean, what does it say? Whether the agreement say in detail that this is what it has been rendered. For example, if there are marketing support services which are being rendered by A to B, so then the agreement or the conduct of the parties will properly capture that this is what is the service, and how do we make sure and how do we supplement that is with the help of the functional analysis asset risk part of the report, which we have a discussion with the officers, I mean, the conducting officers or the functional heads of the businesses, those who are part of that organization. So, what we will do as a first one, we'll ask for the nature of the service. We will understand that what is the kind of a service that was please explain to us. And as part of that process, so what happens? We'll see the agreement, but the agreement will be very theoretical, right? You may not able to understand properly as to what is exact conduct of the parties. So we will send out a detailed questionnaire. So we'll prepare a set of questionnaire for the functional heads or the business heads, those who are into the actual business activities, and they will then what we will ask them questions like you explain us the nature of service. I mean, right from the point A till point Z. I mean, what is happening if there is a provision of marketing support services? I mean, is it a case that you approach the customer or the customer comes to us, and how does it happen? Is there any in the market? Do you organize any seminar or conferences? You know, if you are marketing, if you're providing marketing services, then there has to be something about which we are marketing, right? So we need to tell the tell the customers, and then tell them that this is what we have, this is what we offer. But here in this example, I'm only talking about the marketing services. So what A will see, from A and B side, what we will check is how that marketing services is being rendered. So what we will do, we'll ask the functional heads, for example, if you arrange any seminar or if you arrange any conference where you call your customers, then how do you go about it? Do you just simply put the PowerPoint presentation and explain it to them, or do you call the business heads from from the leaders of the organization, and then they give you the information and knowledge about as to what the product or a service is all about. So they will tell that we have this service, that we are rendering this financial services, say for example, that, and or say, so take for example a mutual fund, that if a company is selling a mutual fund, and if I am rendering marketing services to promote that mutual fund, then what I will tell my customer is that this mutual fund has these are the characteristics, it is giving this much of return, and these are the demographics around that, and this is what it offers, this is the lock-in period if any is there, and then how you will how this product will help you in achieving your retirement plans or your child education plan, and how it is better, whether it is a one time systematic investment plan, or whether it's a month on month plan. So all these information is something which will be provided during the course of that. All this information will come out of the interaction that we will have. So these are the things that we go about collating all the information. So when it comes to the documentation, there are three, broadly the guidance note specified three types of information that needs to be maintained. So one is the enterprise wise document. Second is the transaction, because we are talking about the transaction, which is a service from A to B, and then comes the competition related document. So what comes in the, let's start with the first type, which is the enterprise wide. So as we discussed, we'll understand about the nature of services.
We'll go through the agreements, what is coming out of that agreement. We will document that, and then we'll also note down that this is what we understand. These are the broad nature of services, and in the nature of services, we'll refer to the copy of contract of the agreement which is available. The agreement says this, and the nature of the service is this, because it sets the first point. I mean, and also it gives you an idea how much detail you have to go for the transaction wise detail, and then the computation related info will also be dependent on that. So once you know, and what is the pricing? Yeah. So what is the price at which the service is being provided? So there are various pricing criteria. So we'll ask them if it is a cost plus service that A is providing to B. So when I say cost plus, means the total cost of that enterprise supplemented by the markup, and that's how you arrive at a transfer price. Or is it a sales based commission? I mean, how much sales are you earning? Are you achieving? And then basis that there is the remuneration model is such that you are earning a commission on that. So these are the pricing mechanisms which are usually available. So we will mention about that, and then we come to the transaction specific information. So in the transaction specific information, what we will do, we will capture the functional, we'll do the FAR. So as you would have already learned in the earlier chapters, the very important part of transfer pricing is the functional analysis and the risk part. So in the transaction specific information, you will document what are the functions, what are the assets involved, and then the third is what are the risks each of the parties are carrying. So any queries or any questions anyone has till now? Is it clear, or am I going too fast, or are you able to follow everyone? Anyone want to ask anything? So can you please summarize that what you could understand from the overall what he has said? So basically, while documenting the international transaction, we basically focus on FAR, that is functions, assets, and risk analysis that each party is contributing, so that we can reach an appropriate arm's length price with that we want to represent as we will be representing ourselves in front of the assessing officers, and we shall document these. So that is the main focus of that. Then the nature of transaction, we are entering any details regarding the transactions, and whether we have used the right method of computing the arm's length price. Yes, yes, correct. Yeah. So also when we were saying enterprise information, also there are 2, 3 other factors like shareholding also if you consider here, because it's very important. If A and B they have entered into a transaction, so we need to document that how they have become the related party. I mean, if they're associated enterprises, then what is the trigger point that is there in the group through which they have become the associated enterprise. So we need to document also about the shareholding, whether they have a common shareholding, or is it because of the other provisions of the act that they have become associated enterprise. So the shareholding is the very common thing through which an enterprise. I mean, usually we get to see that in most of the cases it is because of the shareholding that the two entities have become associated. So we'll document about the shareholding, and also in that shareholding, you need to keep this thing in mind that if there is a change in the shareholding, for example, if A was being held by X Limited and there were X number of shares for a particular period of time, and then during the year, if there is a change in the shareholding has been taken over by Y Limited, then you need to document that as well. So both the things have to be captured in your transfer pricing documentation report. So we need to be very mindful of the fact that these two, both the shareholding, I mean, even if there is a change during the year, that is properly being mentioned in the transfer pricing report. So that's an important point to note. And also, while in the enterprise heading,
enterprise-wise document head, what else you will document about the country of these two entities. I mean, if there is an international transaction, obviously there will be two countries involved. If it is an international, but if it is specified, then obviously it will be India. So the country of tax residence of both the parties you will document. And then what is the ownership linkage, as I already mentioned, that the shareholding you will mention. And then the name, the exact name, what is the address, what is the legal status, is it a LLP, is it a corporation, is it a partnership, or whatever is the status form. So that's what we will mention. So this is all about the first level, which is the enterprise level document that we need to put in the report. Then we move on to the transaction specific details. So when I say transaction specific, so there is a transaction. The transaction in our example is the service rendition. So there we will capture about the FAR as in the functional analysis and risk part. This is very important because this decides your other subsequent parts. I mean, what will be the method of calculation of the arm's length price, how the benchmarking will be done, and then obviously the characterization. So this is very important part, and under this functional analysis part, I'll go into a little bit of detail how we will have to document that. So in the functional analysis, what we will capture is, for example, what is the strategy? The first point in this example. So there could be different, different FAR for the different services or the different transaction that we are talking about. If it is manufacturing, the FAR will be different. If it is distribution services, the FAR will be different. If it is a normal service, like the marketing service, which I've taken example, it will be different. So you need to consider the facts and the circumstances and accordingly document what it actually talks about. So the first point is a strategy, as in what is the strategy that is being adopted at a group level. I mean, sorry. Strategy as in what is their overall strategy about that service? I mean, how they're going about. I mean, is there any person at the group level who is deciding or who is guiding A Limited that this is how you have to, this is the broader strategy and policy that we have set, and you have to go about and follow this policy while you render your service to B Limited. So first point is the strategy that. And then there will be the other requirement, like the functional and the specification requirements. Like in that we will determine what exactly in the service, the functional aspect of that service. I mean, how that has been, started from level A to level B. And then comes the actual provision of service. In the actual provision of services, you will document in detail as to what is happening. So when I say what is happening is whatever interaction you had with your business heads, the functional heads, so that you will mention in that third point, the provision of service point. And then within that, how you will further supplement your information is you will you can prepare a flow chart. I mean, this is how the service has been rendered, or these are the different connecting points about the services. I mean, that's how, if A has how A goes about rendering services to B Limited is they organize the events, they get a customer call, then they, they create a first point of, they put that into their system that this is a request from the customer that we have received. And accordingly, they'll go about addressing that customer query. So that's how they go about approaching the customers. For example, in case of a marketing service, they will prepare if they have received a call from the customer that we want to understand about your product. So how this A Limited will go about is, and how they will what they will do is they will prepare a plan, they will prepare a PowerPoint presentation, they will put all the aspects, all the characteristics of that product, how it is being, it is helping other customers in the market. So all this information they will put. So we will need to, accordingly customize and put that in the form of our FAQ. That's how they go about. And then how, if, for example, in case of some customers, what happens is
some customers, they are like, no, when it comes to price negotiation, we'll not pay you this percentage of commission. We want this level of discount. So in that case, we need to see, is there a proper level of authority available at the level of A Limited to approve that price or not. So all this information will go into your FAR. And then comes the risk analysis. So when I say risk analysis, there are various components, and even the OECD and the other UNTP manual, they have a guidance available on this point as to we need to capture the risk. For example, if there is a market risk, say for example, the markets are going down. So nobody will like to buy that. I mean, people will and they are not optimistic about the market, right? So they will think twice whether we should invest in the share market, as it is very volatile, and there are a lot of uncertainties that I mean, whether the market will grow or market will go down. So all these information are very important when it comes to that all these discussions that we will have with the entities involved. So we need to capture about all these things, and if there are any higher discounts that we are providing, then we need to when we are comparing our transaction with a third party scenario in the next the third level of where we will have the competition related documents. So we will have to document everything, that these are the discounts that have been provided, and then market risk I talked about, and then there will be, is there a forex risk involved? For example, whether A and B, the remuneration for the services, whether it is being, whether the forex has been properly, whose risk it is to bear the forex. I mean, if the payment is coming in dollars, then is it the A Limited or B Limited who is bearing that risk? So that we need to mention. And then the service risk, as in, for example, if the customer claims something, then who will bear that risk? Will it be A Limited or B Limited? So that's how, so there are criteria about the risk. So there are other kinds of risk like contractual risk, and then the credit risk I talked about, the foreign exchange risk, and sometimes we have the capacity utilization risk as well, if we're not able to properly utilize our resources that we have. And then, so considering all these things, the functions analysis and risk part, you arrive at a characterization. So the characterization determines whether, so in our case, what do you think? I mean, whatever I have specified, will it be a limited risk limited risk provider, or a full-fledged risk provider, or the full-fledged limited or no risk provider, considering the FAR that you have just listened to and I mentioned. So what, according to you, should be the characterization of this entity? Any guesses from anyone? Yeah, in fact, last 2-3 minutes we could not hear you. So yeah. So, sir, I'm saying, so I've explained that I've taken the example of marketing services, and I've explained them the FAR, the functional assets and risk analysis. So I'm just posing a question to the class. If what, in their opinion, I have defined, what should be the right characterization of A Limited in this field? So should it be the full-fledged service provider, the limited risk service provider, or low risk service provider? This is what we have just discussed. Vanita, I think slightly there are network issues. I'm not sure at what end. But Is it clear, sir? Is it clear now? question was not clear, in fact. Okay, no problem. I'll just go ahead. So I was saying, so when we discuss about functional analysis and risk, then comes the characterization. We need to determine what is the characterization of the entity. So if we're preparing a transfer pricing report, we will document that in this case, it is a full-fledged service provider or a limited risk provider. So in our case, it was a limited risk service provider. That means the risk which was being it was being taken over by A Limited was very limited. So in that case, the remuneration or the pricing methodology, that is cost plus markup that we have specified, is perfect.
And accordingly, we will move to the third point, which is the computational. So in the computational analysis, what we will do, we will analyze about the methods, the six methods that you read, whether the cost plus is appropriate, the TNM is appropriate, PSM, RSM, other methods. So all these methods we will go into detail and then document in the report that this is what it is all about. Which method is applicable in our case, considering the previous analysis under the functional analysis that we have done. So this is that we will come to our computational part and then we will document about the methods of the report. So these are the methods, and then accordingly we'll select one method. Sorry. And then once we select one method, we will undertake the benchmarking analysis. So when I say benchmarking analysis, we'll go to the comparability analysis. So in the comparability analysis, what we will do, we will how we go about, we will see the information which is available in the public domain. There are a lot of databases which are available. And then based on, we will carry out a search, third-party search in those databases, and accordingly we will arrive at a conclusion that this is what in a third party scenario these entities are earning, and then basis the comparison of our transaction and the information available in public domain, we have arrived at this thing that we are at arm's length. I mean, the transaction between A and B is at arm's length. And during this entire process there are a lot of assumptions, pricing adjustments that are there. So based on the facts and circumstances of the entities involved, we will accordingly do those adjustments. So clear, everyone? So basically for all, see what I could understood from the entire this chapter 7 is that three type of documentations. One is enterprise-wise documents, other is transaction-specific documents, and then third one is the computation-related documents. So these three type of documents are required to be maintained as per Rule 10D of the these transfer pricing rules. So Manita, I think now our speakers will be taking over the charge, and before that, I would like to invite Sakshi Ragwani to please give a vote of thanks to Manita. Hello. Yes, Sakshi. Hello, sir. Am I audible clearly? Yes, yes, yes. Okay. So I would like to thank you, ma'am, for your guidance through the transfer pricing journey. You provide us the guidance about the documentation which we have to prepare for the transfer pricing transactions. So thank you so much, ma'am. So Manita, Manita, we are now continuing with our speakers. So we have our speaker Ayushi Podar here, who will now start with our topic. Hello everyone, my name is Ayushi Podar, and today I and my friends Jatin and Jayesh are going to take third session regarding the guidance note about transfer pricing. So let's start with the session. In this session, we'll cover the following topics: documentation and verification, penalties, scope of examination under section 92. Now, what are documentation and verification required for transfer pricing? Every person who enters into an international transaction is required to maintain documents and records as prescribed under section 92B. So as
Manita ma'am has talked about it. According to Rule 10D, sub-rule 1, a person needs to keep and maintain 13 different types of information and documents regarding international transaction undertaken in a given financial year. Now, these information and documents can be classified into three different types. The first is enterprise-wise documents. Secondly, transaction-specific documents, and next is computation-related documents. So अभी आप देखेंगे ना तो you just go to the previous two classes. याद है आपको पहले की दो classes? है ना? Where what we discussed? First we discussed the transfer pricing provisions. Overall, what are the transfer pricing provisions? And then in next class we have discussed methods of computing the arm's length price. Now what is third class? तीसरी class क्या है? जो हमने पहले दो क्लास में पढ़ा उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए. पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस क्या है, यही सब देखा ना हमने, या आर्म्स लेंथ प्राइस क्या है. सो बट अल्टीमेटली ये सब पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं ना, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन रखोगे और नाउ दिस डॉक्यूमेंटेशन will be useful for you, for the auditor, and then ultimately for the assessing officer to determine whether you have computed the arm's length price properly or not. आपके अपने लेवल पे भी, ऑडिटर के लेवल पर भी और असेसिंग ऑफिसर के लेवल पे भी. तो ये सब चीजों को तीनों जनों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शन, कुछ ना कुछ तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ना. आप ये तो कर नहीं सकते कि साहब मैंने तय कर लिया आर्म्स लेंथ प्राइस कि ये बिल्कुल ठीक है और मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया विदाउट कीपिंग एनी डॉक्यूमेंटेशन. तो समवेयर यू नीड टू एस्टैब्लिश. तो उसके लिए जब ये डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो देन देयर आर टू फेजेस. वन इज टीपी स्टडी, ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन स्टडी. सो दैट इज बीइंग डन बाय द कंपनी और द assessee itself, and then there is a report by the accountant, and accountant in fact a chartered accountant who is basically transfer pricing auditors. तो वो रिपोर्ट एक उसको और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी करता है उस पे एक और रिपोर्ट उसको देनी होती है. तो आज का जो ये फर्स्ट लिंब ऑफ डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन. And then the second speaker will discuss the audit report part of it, and then we shall discuss penalties and other aspects too. So let's move on. Now, what are enterprise-wise related documents? These are documents that describe about the enterprise, उसकी relationship with the other enterprises जो कि associated है, and the nature of the business carried out. Now, what do you mean by transaction-specific documents? Anyone wants to answer? Manita ma'am also told you. Specific transaction में होता है कि ट्रांजेक्शन करना है. इसमें डिटेल्स होती है regarding each transaction, the terms of the contracts, description of functions performed, assets जो employ किए हैं, फिर कितना risk हमने लिया है for entering into the transaction, economic and market analysis, etc. So, computation-related documents. These are the documents which describe and detail the methods considered. हमने जो working assumptions लिए हैं about the policies and the adjustments made to transfer prices, any other related and relevant information, data, and documents which are used for determining the arm's length price. Now, also, these documentation requirements not only applies to the international transaction between associated enterprise, but also to the deemed international transaction and also to the specified domestic transactions. These list of documents are not prescriptive in nature. Means ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये documents रखना एकदम जरूरी है, but also the enterprise-wise documents and the computation-related documents are
required to be maintained, but other documents can be मतलब it is up to the enterprise call कि उनको maintain करना है या नहीं. It is not essential कि हर type of document maintain किया जाए. Essential नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप उसको maintain नहीं करो. You need to take a judgment so that ultimately you can establish yourself in future. Now let's move on to the next topic about the ownership profile and business. तो हम लोग को डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा अबाउट द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द असेसी, शेयर्स की डिटेल्स देनी पड़ेगी और ओनरशिप इंटरेस्ट हेल्ड देयरइन बाय द अदर एंटरप्राइजेस. नाउ हियर अदर एंटरप्राइज शुड रेफर टू द एसोसिएटेड एंटरप्राइज जिसके साथ हमने ट्रांजैक्शन किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. नाउ अब जो ये इंटरप्राइज है ये कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है, एचयूएफ हो सकती है. तो इनको क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी. तो इफ इट इज अ कंपनी तो जो नेम्स होंगे मेंबर्स के, जो कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज उनके नेम्स देने पड़ेंगे, शेयर्स उनने कितने हेल्ड कर रखे हैं वो देनी पड़ेगी, और उनकी होल्डिंग एज रिगार्ड टू द टोटल होल्डिंग ये सब उनको बताना पड़ेगा. अब इफ इट इज अ फर्म तो उन लोगों को नेम्स देने पड़ेंगे पार्टनर्स के, फर्म के पार्टनर्स के नेम्स, मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन और उनकी क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनको बताना पड़ेगा, और सिमिलर डिटेल्स देनी पड़ेगी एज इन केस ऑफ बीओआई, ट्रस्ट एंड एचयूएफ. तो आप देखिए कि ये बड़ी एक सिंपल सी स्लाइड इन्होंने यहाँ लिखी, लेकिन जब ये बात कर रहे हैं ऑनरशिप, अभी आप एई के बारे में भी बात कर रहे हो, इट इज ओनली अबाउट द एसएससी, यस सर. नॉट अबाउट द एईस. चलिए ठीक है. नाउ डिस्क्रिप्शन इसमें यह है कि हम लोग को डिस्क्रिप्शन देना है ओनरशिप स्ट्रक्चर का. सिर्फ तभी नहीं देना जिस वक्त वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज हम लोग रिलेशनशिप में आया एसोसिएटेड एंटरप्राइज की, लेकिन हर बार देना पड़ेगा जब भी ओनरशिप में चेंज आएगा. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. assume that A Limited, which is India-based company, and X Incorporation, which is based in USA, are associated enterprise और holding जो है X Incorporation की A Limited whereas under. Total number of fully paid up equity shares subscribed in A Limited जो है वो 1 लाख है. Now total number of shares जो कि X Incorporation held करता है on 1st April 2001 in A Limited वो है 50,000. तो for the date 1st April to 24th November उसकी होल्डिंग क्या रहेगी. एंड नाउ एक्वायर कर रहा है एक्स इनकॉर्पोरेशन ए लिमिटेड में 24th नवंबर को थ्रू प्राइवेट परचेज 10,000 शेयर्स, और फिर बाद में डिस्पोज कर रहा है 24th Feb 2002 को 25,000 शेयर्स. तो इसमें ए लिमिटेड जो है वो एसएससी एंटरप्राइज है और वो होल्डिंग रिपोर्ट करेगा अपने एसोसिएट एंटरप्राइज में. एसोसिएट एंटरप्राइज की जो होल्डिंग है उसमें वो उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, और वो कैसे रिपोर्ट करेगा इसको आंसर करना है. जब जब जैसे चेंज हो रही शेयर होल्डिंग, पहले 50% थी तब उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर 60% हो गई फिर रिपोर्ट करनी पड़ेगी, 60 - 25 35% हो गई तब रिपोर्ट करनी पड़ेगी. 4th November और 24th February को डिफरेंट डेट पर. Yes, it is correct. So basically within the year, this changes within the year. Yes. Within the year भी उसका अगर change of shareholding है तो उसको रिपोर्ट करना है इन दी ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन. ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन जो एसएससी को खुद को मेंटेन करना है ना, उसका पूरा एक अलग से वो डॉक्यूमेंटेशन रखता है. तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि एज एंड व्हेन देयर इज चेंज इन शेयर होल्डिंग, सबसे पहले तो कि उसकी ओवरऑल शेयर होल्डिंग शुरू में कितनी थी, बीच में कोई चेंज हुई तो वो कितनी है, और क्लोजिंग शेयर होल्डिंग कितनी. So that is how the detail of ownership structure has been given in this illustration. So as you can see, for period from 1 April 2001 to 23 November 2001 उसकी शेयर होल्डिंग जो थी वो 50,000 शेयर्स थी, तो 50%. Now for the period 24 November 2001 to 23 Feb 2002 उसकी शेयर होल्डिंग जो है वो 60% हो गई, और लेटर ऑन वो 35% हो गई. नाउ प्रोफाइल देनी पड़ेगी उन लोगों को मल्टीनेशनल ग्रुप की जिसकी असेसी एंटरप्राइज जो है वो पार्ट है, अलोंग विद द नेम, एड्रेस, द रेजिडेंस, टैक्स रेजिडेंस ऑफ द कंट्री, लीगल स्टेटस ऑफ ईच एंटरप्राइज ऑफ द ग्रुप,
with whom the international transaction or the specified domestic transaction have been entered into by the assessee, and the ownership linkages. Now, let us understand the ownership linkages by with the help of example. For example, A Limited India based company और वो 100% subsidiary है H Limited की, which itself is a 100% subsidiary of R Incorporation, और R Incorporation की another subsidiary है C Limited. Now A Limited enters into transaction with C Limited. तो इसमें ownership linkages कौन report करेगा? Anyone want to answer? Since R Incorporation की subsidiary है H Limited, उसकी subsidiary C Limited भी है और H Limited की subsidiary है A Limited. अगर A Limited enter हो रही है transaction में with C Limited, तो in this case A Limited will report the ownership linkages between itself and C Limited. Now this. ये तो खैर बहुत ही छोटा सा इन्होंने एग्जांपल दिया where 2-3 companies are involved, है ना. अभी आप स्लाइड के पहले उस पे जाइए, 2 स्लाइड पहले. हाँ, a profile of multinational group. तो जनरली हम देखते हैं ना where some small corporates are there, 1-2 companies are there. So this may not be much complicated reporting so far as small group is concerned. 2-4-5 companies हो, 8-10 companies. बट अभी आप मान लो एक ग्रुप इमेजिन करिए. कौन सा इमेजिन करना आपको बताइए. सबसे पहले आप रिलायंस ही ग्रुप है. टाटा को भी कर लिया. व्हाई डू यू टाटा? हैं? अडानी को क्यों नहीं इमेजिन करते? अभी रहने देते. तो अब आप इमेजिन करिए कि ये इन्होंने जो 4 लाइन बोली है ना रिगार्डिंग reporting of that company and structure of that particular group. इमेजिन करिए कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है अंडर दिस डॉक्यूमेंटेशन इटसेल्फ. तो ये आपके विजन में होना चाहिए. आप बिल्कुल एक ऐसा सिंपल सा टॉपिक नहीं है कि आपने 2 कंपनीज हैं और उसमें आपस में एक का ओनरशिप स्ट्रक्चर रिपोर्ट कर दिया या वो उसके एसोसिएटेड एंटरप्राइज कौन से हैं इतना से रिपोर्ट कर दिया. So when it is a large group, when it is a global group जिसकी कंपनीज जो है वो ग्लोबली बहुत सारी जगह पे है, तो then you will find that a complicated reporting is there with reference to the ownership structure as well as the other associated enterprise of that particular company, that particular group. अभी उसमें कभी ये भी हो सकता है कि साहब एक साल तो कोई कंपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, दूसरे साल में वो नहीं है. So every year you need to examine whether this remains associated enterprise or not for that particular year. These are the things which are involved in this reporting. Next. Now डिस्क्रिप्शन देना होगा द बिजनेस ऑफ द असेसी, कौन सी बिजनेस लाइन में असेसी है, कौन सी इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रहा है, एंड द बिजनेस ऑफ आल्सो द एसोसिएटेड एंटरप्राइज जिसके साथ असेसी ने ट्रांजैक्शन किया है. अब नाउ दिस वुड इंक्लूड द एरियाज सच एज द बिजनेस मॉडल यूज्ड, टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉयड, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और ट्रेडेड, मार्केट एड्रेस्ड और कंपटीशन फेस्ड, ज्योग्राफिक डिस्पर्जन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एक्सेट्रा. अब आपको कोई कह दे कि साहब पहला तो अपन ने डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग दैट एंटरप्राइज, है ना. अभी दूसरा ये कह रहे हैं कि साहब यू नीड टू गिव द ब्रॉड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द एसएससी. तो आप क्या करोगे? आपको कह दे कि साहब अब आपको इसका टीपी स्टडी डॉक्यूमेंटेशन करना है, टीपी स्टडी एंड डॉक्यूमेंटेशन करना है. तो आपको एक असाइनमेंट दिया. So how you will approach? क्या अप्रोच करोगे आप फॉर द पर्पज ऑफ से? अभी बहुत सारे आगे कई सारी चीजें हैं. ये एक इन्होंने बात कही है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द एसएससी. क्या करोगे आप? बेसिकली अपन सबसे पहले अपन ये नॉलेज कंपनी कौन सी फील्ड से बिलोंग करती है, क्योंकि अपन उसी बेसिस पे देखा जाएगा कि ट्रांजैक्शन
कौन से कई ट्रांजैक्शन एंटर कर सकते हैं कंपनी पर, जैसे ऑफिशियल अपने प्रेमाइसिस के लिए भी कर सकती है, लेकिन अपन वो ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे जो कि मेन अपने बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कंसीडर होगा कंपनी मेन। तो उसके लिए यू नीड टू इंटरेक्ट विद पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? आप केवल उसने कुछ ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया और उससे आपने समझ लिया बिजनेस मॉडल क्या है। इज इट पॉसिबल? नो। ट्रायल बैलेंस से आपको क्या मिलेगा? हाँ, इसकी रेवेन्यू क्या आ रही है, कितने सोर्सेस से इसको रेवेन्यू आ रही है, क्या सेल ऑफ गुड्स से इसको रेवेन्यू आ रही है, सेल ऑफ सर्विसेज से आ रही है। हाँ, ये चीजें आपको ट्रायल बैलेंस से यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाँ ये चीजें आपको आ रही है। अभी आपको वो बिजनेस मॉडल क्या है, यू नीड टू इंटरव्यू विद द रेस्पेक्टिव पर्संस हु आर डीलिंग विद। तो अगेन दिस वर्क इज नॉट दैट आप अपने कैबिन में बैठ गए और आपने फटाफट बिजनेस मॉडल लिख दिया और फटाफट आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज कौन है ये लिख दिया, उसकी शेयर होल्डिंग लिख दी। इंक्वायरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन यू गो फॉर एनी सच डॉक्यूमेंटेशन। आपको अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लेकर के आपको देखना पड़ेगा कि यार मैं इस बंदे से मिलकर और बात करके एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आई शुड सी दैट व्हाट इज देयर बिजनेस मॉडल। हर तरीके का, देयर मे बी 10 डिफरेंट क्लाइंट्स है ना, हु आर इनटू द सेम बिजनेस बट दे मे रन देयर बिजनेस बाय वे ऑफ ए डिफरेंट प्रोसेस। उनका बिजनेस सेम है बट उनका बिजनेस का साइज अलग अलग हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको देखने की होती है और इंक्वायर करने की होती है। देन यू विल बी एबल टू मेक दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट। Now let's move on to the next topic, associated enterprise relationship with the assessee. The assessee has to determine whether by virtue of clause C to M of section 92A subsection 2 certain enterprises shall be deemed as associated enterprise. अब अकाउंटेंट है, उसको ये देखना पड़ेगा, उसको चेक्स लगाने पड़ेंगे और ड्यू डिलिजेंस रखनी पड़ेगी कि जो एंटरप्राइज है असेसी एंटरप्राइज और रिलेशनशिप है एसोसिएटेड एंटरप्राइज में, वो एक्चुअली रिलेशनशिप है भी या नहीं है, मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइज एक्चुअली वो है भी या नहीं है। तो एज पर दिस क्लॉज सी कहता है कि अकाउंटेंट को चेक करने पड़ेंगे रजिस्टर ऑफ लोन्स इन्वेस्टमेंट्स मेंटेन बाय द असेसी अंडर सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्लॉज डी बोलता है कि उसको ऑब्टेन करनी पड़ेगी डिटेल्स सभी गारंटीज की पर्टेनिंग टू द बोरोइंग्स फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंप्लीटनेस। ये इससे क्या निकल के आएगा? जैसे इन्होंने बोला 186 देखना है इनको या 186 का रजिस्टर देखना है। क्या होता है 186? अपन लोन्स वगैरह इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द असेसी। तो वो ये कह रहे हैं, ये अकाउंटेंट मतलब जो ऑडिटर है ना, उसको क्या करना है टू आइडेंटिफाई। एक तो उन्होंने लिस्ट दे दिया, ठीक है, बट हाउ डू यू आइडेंटिफाई? तो 186 की लिस्ट में देखिए कि साहब उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं और उसको रिकंसाइल कीजिए व्हाट डॉक्यूमेंटेशंस दे हैव मेंटेन। तो कहीं कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है जो एज ए एसोसिएटेड एंटरप्राइज वो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। सो टेक दोज डिटेल्स। तो एक चेक दिया है इन्होंने कि 186 में भी आप जाकर के और वहां रजिस्टर मेंटेन करके और उसमें किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्होंने अगर इन्वेस्ट किया है तो एग्जामिन दैट आल्सो। So this is one of the check. Next. Now the accountant shall obtain representation from the management detailing the composition of the members of the board of directors, उनका appointment कैसे हुआ है, और the governing board, executive directors की details, executive members of the governing board. Further उनको check करना पड़ेगा registers of director members को check करना पड़ेगा कि directors के registers. Accountant shall obtain a representation from the management detailing composition and appointment of the members of the board of directors or governing board, executive directors and the executive members of the governing board. According to clause C, उसको accountant को obtain करनी पड़ेगी representation from the management कि enterprise जो है वो
ओनली डिपेंडेंट है ऑन द इंटेंजिबल एसेट्स जिसके ओनर जो है वो अदर एंटरप्राइज है। यानी कि अगर एंटरप्राइज यूज कर रही है पेटेंट्स कॉपीराइट किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज के, तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज जो होनी चाहिए वो ओनर होनी चाहिए उस पेटेंट या कॉपीराइट के, तभी तो वो दोनों एसोसिएटेड। Also the accountant shall obtain the list of all the purchases of raw material and consumables requirements made by the assessor and compute the party-wise share of business. Now, clause I. Accountant shall obtain a representation from the management of the fact that enterprise sold the goods and articles manufactured processed by it. इसका मतलब है कि अकाउंटेंट को चेक करना पड़ेगा कि एंटरप्राइज ने जो गुड्स और सर्विसेज सेल की है वो उसने प्रोसेस किया है, मैन्युफैक्चर किया है और वो सोल्ड हुई है टू द एसोसिएटेड एंटरप्राइज। और ये कैसे पता लगेगा? जब एसोसिएटेड एंटरप्राइज यानी कि जो अदर एंटरप्राइज है वो इन्फ्लुएंस कर पाएगी उनकी प्राइस को। जो गुड्स सोल्ड हुआ है उनकी प्राइस अगर वो इन्फ्लुएंस कर पा रही है इसका मतलब वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, तो अकाउंटेंट शुड चेक दैट। क्लॉज J. The accountant shall obtain representation from management providing details of controlling interest in all the affiliated parties so as to determine the common controlling interest in two companies. Clause K. The accountant shall obtain representation from management providing details of controlling interest in all the affiliated parties so as to determine in case of determine the controlling interest in two companies. Now these 2 points said about the individual and actual. Clause I. Accountant shall obtain the partnership AOP or BOI agreement in order to determine whether any enterprise holds not less than 10% interest in other firm, association of person or body of individual. Now the last clause, clause M. The accountant shall obtain a representation from the management to the effect that there exists or does not exist does not exist between the two enterprise any relationship of mutual interest in case any such relationship is prescribed by CBDT. और ये सब कुछ अकाउंटेंट को अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस लगानी पड़ेगी। Now next topic, details of international transaction and specified domestic transaction. तो ये सब डिटेल्स भी असेसी को जो है वो देनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा the nature and the terms of international transaction or the specified domestic transaction which are entered with the associated enterprise, details of the property transferred, for example उन्होंने कोई property transfer की हो या फिर service provide की है, quantum of that service or the value of such transactions. Also the description of the function performed, the risk assumed and assets employed or to be employed by the assessee and by the associated enterprise involved in the international transaction or the specified domestic transaction. Now the records having a bearing on international transaction or specified domestic transaction. तो assessee को जो है वो रिकॉर्ड देना पड़ेगा, the market analysis, market study करनी पड़ेगी उसको, market study reports देनी पड़ेगी, forecast, budgets और any other financial estimates prepared by the assessee for the business as a whole or for each division. For example कि assessee जो है वो बहुत सारे divisions में काम करता हो, बहुत सारे divisions हो, तो उसको हर division के बारे में separately furnish करनी पड़ेगी details। और मान लो कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेगमेंटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी उसको देनी पड़ेगी which may have a bearing on the international transaction or the specified domestic transaction. ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एंड मार्केट एनालिसिस, ठीक है। तो अगर अपन बात करें 2021-22 की या 2020-21 की, 20-21 में क्या था? कोविड था। 21-22 में क्या हुआ? रिकवरी हुई। 22-23 में क्या हुआ? 1 साल हो गया किसी चीज को, रशिया यूक्रेन वार, है ना। तो आप देखिए कि कितना फ्लक्चुएशन है इकोनॉमिक एंड मार्केट एनालिसिस में, है या नहीं है। तो अभी मान लीजिए कि मैंने कोई ट्रांजैक्शन मार्च 20 में किया, फिर मार्च 21 में किया, मार्च 22 में किया,
और मार्च 23 में किए। 4 तरीके के ट्रांजेक्शन हुआ है ना। मार्च 20 नो कोविड, मार्च 21 कोविड, मार्च 22 रिकवरी, मार्च 23 वार। अब आप देखिए कि हर ट्रांजेक्शन हर ईयर में देर आर डिफरेंट इकोनॉमी एंड मार्केट कंडीशंस। तो मान लीजिए मैंने एक, अभी ये असेसमेंट कब होंगे? असेसमेंट होंगे 4 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, है ना। और मैं किसी अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को गुड्स एक पर्टिकुलर रेट पे मार्च 20 में बेचता हूँ, मार्च 21 में भी बेचता हूँ, 22 में भी बेचता हूँ, 23 में भी बेचता हूँ। कैन आई कंपेयर टू प्राइस? मार्च 20 का मैंने एक कंपेयर कर लिया और मार्च 23 के साथ में कर लिया? नो, है ना। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक ही कंपनी अपने ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज को एक साल में, नॉट एक साल, एक दिन अलग प्राइस पे कुछ बेच रही है, दूसरे दिन अलग प्राइस पे कुछ बेच रही है। दिस इज पॉसिबल, है ना। तो ये तो आपका एडिशन कर देगा कि साहब ये क्या हुआ, आपने अपने एंटरप्राइज को आप डिफरेंट रेट पे दे रहे हो। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। एक इसको और डिटेल में और डीप में जाके अपन बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, दिस विल बी यूजफुल फॉर यू कि साहब देखिए ये उस वक्त मार्केट एनालिसिस ये कहता था, इकोनॉमी ये कह रही थी, अभी ये कह रहा है। तो उस वक्त मैंने जो प्राइस तय किया था वो इस एनालिसिस के बेसिस पे किया था, वो उस वक्त कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन था, या वो उस वक्त आर्म्स लेंथ प्राइस था। और ये ट्रांजैक्शन अगर मैंने कम चार्ज किया अपने ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, तो मार्केट ही नीचे आ गया, तो मैं कैसे उसको ज्यादा चार्ज करूं? ये आपके विजन में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि इन्होंने आपको पूरा मौका दिया है, ऐसा नहीं है। दे हैव सेड इन द रूल्स कि जब आप हर तरीके से आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन करने के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको कंसीडर करके और उनको आप डॉक्यूमेंट करके अपने पास रखिए और अपने ऑडिटर से चेक कराइए। कंप्लीट कितनी बातें लिखी इन्होंने एक एक करके, ये इन्होंने थ्योरेटिकली कुछ लिखा, प्रैक्टिकली अपन कुछ कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दैट मीन्स दे हैव गिवन यू द फुल अपॉर्चुनिटी टू मेंटेन योर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर। अभी आप एक एक करके इनको एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब असेसी इंटरप्राइज है उसको देखना पड़ेगा कि जो जिससे वो एसोसिएटेड है, तो वो इंटरप्राइज और जिससे वो एसोसिएटेड नहीं है यानी कि अदर एंटरप्राइज। तो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस भी होंगी, कुछ कंट्रोल्ड भी होंगी। तो उन दोनों में कंपैरेटिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए उन लोगों को दोनों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। A record of the uncontrolled transaction taken into account for analyzing their compatibility with the international transaction or specified domestic transaction entered into, including the record of the nature, terms and conditions relating to any uncontrolled transaction with third party, which may be of relevance to the pricing of the international transaction or specified domestic transaction. So while comparing, they'll also compare it with the third party references, the prices which are used to determine the arm's length price. A record of the analysis performed, as Bhupendra sir said, that market analysis करना पड़ेगा, बहुत सारे aspects होंगे जिनको देखना पड़ेगा। तो जो भी analysis perform किया है to evaluate the compatibility of the uncontrolled transaction, तो वो भी उनको एक record establish करना पड़ेगा। Now description of methods considered and working. तो हम लोगों ने जैसे बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे इससे प्रीवियस सेशन में, तो हम लोगों को उनका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि हमने कौन सा मेथड यूज किया है फॉर कैलकुलेटिंग फॉर डिटरमाइनिंग द आर्म्स लेंथ प्राइस
in relation to each international transaction or specified domestic transaction, along with कि हमको क्या लगा कि हमने ये मेथड क्यों चूज किया है, the most appropriate method, along with the explanation की why such method was selected and how such method was applied. Now also the actual working record जो हमने बनाया होगा कि actual working हमने ऐसे कैरी किया है, इस तरह से हमने उसको कैलकुलेट किया है आर्म्स लेंथ प्राइस को, तो वो भी हम उसको बताने पड़ेंगे कि हमने कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं. फॉर एग्जांपल हमने डिस्काउंट के एडजस्टमेंट्स किए थे पिछली बार, तो वो सब उनको अकाउंट पर करने पड़ेंगे. तो सबका आपको बताना पड़ेगा. जैसे आर्म्स लेंथ प्राइस में अपन जब डिस्कस कर रहे थे तो देयर आर सम डिस्काउंट्स कि आप क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर देयर. अभी आप दो ट्रांजैक्शन को कंपेयर कर रहे हो, एक में डिस्काउंट नहीं है क्योंकि दे हैव लेस क्वांटिटी व्हिच हैज बीन सोल्ड बाय देम, है ना. दूसरे में डिस्काउंट है बिकॉज हायर मोर क्वांटिटी हैव बीन सोल्ड. तो उसका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. आप सिंपली जब एओ पूछेगा जब नहीं बताओगे, रिकॉर्ड में लिखो कि साहब ये एडजस्टमेंट्स हमने किए हैं बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट और बिकॉज ऑफ द एनी अदर फैक्टर, है ना. और उसका जो भी आपका मान लो इफ इट इज इंटरनल कप, है ना, या कोई किसी भी मेथड के लिए कोई इंटरनल आपका डॉक्यूमेंटेशन है तो वो आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाना पड़ेगा. या कोई एक्सटर्नल आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी आपको पार्ट बनाना पड़ेगा. The assumptions, policies, and the price negotiations, if any, which have critically affected the determination of arms length price. हमने कुछ assumptions लिए होंगे while calculating the arms length price, और कुछ policies follow की होगी, price negotiations हुए होंगे, तो वो सब भी हमको consider करने पड़ेंगे while calculating the arms length price. And also the adjustments, we have talked about it, and any other information. Now, can you tell me about the relief from maintenance of specific records? हमने ये उसमें भी पढ़ा था हमारे सेशन 1 में कि अगर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगी तो हम लोग को जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है 92D में वो रखने की जरूरत नहीं है. So what was that limit? 1 crore. तेरे उसमें लिखी हुई है, ऐसे भी याद है. वेरी गुड. It is correct. Nothing contained in subrule 1 जो हमने अभी पढ़ा है, insofar as it relates to an international transaction, shall apply in case where the aggregate value as recorded in the books of accounts of international transaction entered into by the assessee does not exceed ₹1 crore, provided that the assessee shall be required to substantiate on the basis of the material available with him. मतलब assessee को खुद determine करना पड़ेगा कि वो जो एंटर किए ट्रांजैक्शंस उसने मतलब कुछ इनकम भी होगी, कुछ एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, वो उसको खुद उसका जजमेंट होएगा इस पे, मतलब जो भी उसके पास एविडेंसेस होंगे उसके हिसाब से कि जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो इन एग्रीगेट 1 करोड़ से ऊपर जा रही है तो उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो देयर इज नो नीड. नाउ द सीलिंग लिमिट जो है ये 1 करोड़ वाली, ये विद रिगार्ड टू असेसी है, नॉट विद रेफरेंस टू एनी अंडरटेकिंग और यूनिट. मतलब असेसी एज अ होल है, सिर्फ उसके पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड नहीं है. The limit applies with reference to all the international transactions entered during the previous year. और इसका मतलब ये नहीं है कि असेसी जो है वो फर्निश नहीं करेगा ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E, उसके लिए उसको कोई एग्जेम्पशन नहीं है, उसको ये फर्निश करनी पड़ेगी ऑडिट रिपोर्ट. Now the supporting documents which are required to be furnished. The information specified in subrule 1 and 2A shall be supported by authentic documents which may include the following: official publications. अच्छा, इस पे एक एक डिस्कस करते हैं, है ना. ऑफिशियल पब्लिकेशंस क्या हो सकता है? ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं आरबीआई assumption ये ग्रोथ रेट का दी हुई ग्रोथ रेट का, तो वो किस तरह अफेक्ट करती है ट्रांजैक्शंस को. बिल्कुल. और जैसे मान लो कोई प्राइस से रिलेटेड है तो व्हाट आर द ऑफिशियल पब्लिकेशंस? जैसे मान लो कमोडिटी मार्केट है, ऑफिशियल पब्लिकेशंस क्या है? हर 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 उसका, जैसे मान लो स्टील है ना, या कोई आपके और भी कोई माइनिंग का प्रोडक्ट है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के हैं या जो एसोसिएशंस हैं, तो दे कीप ऑन पब्लिशिंग रेगुलर
prices of the कि market में किस चीज का क्या price चल रहा है. तो जो भी official publications हैं, which are recognized publications of any organizations or any institutions or by the government, so they may be taken as base for the purpose of our documentation. Reports, वो भी हो सकता है. Studies, कोई market में किसी ने कुछ study किया, that can also be the, and वो ultimately आपका एक base बन सकता है. And any other database. बहुत सारे, जैसे मान लो गोल्ड है, तो डाटा डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ गोल्ड का प्राइस चलता रहता है. इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्या है, ये क्या है, तो उसकी जो भी रिलेवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उन्होंने क्या प्राइस दे रखा है. तो दैट मे आल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन. तो सिंपल आपका खुद का डाटा या एक्सटर्नल किसी दूसरी कंपनी का डाटा इतना ही रिलेवेंस नहीं है. अदर देन दैट, तो जनरल कई सारे डाटा, कई सारी स्टडीज, पब्लिकेशंस हैं, दैट कैन आल्सो बी दी यूजफुल documentation for the purpose of this transfer price. Next. प्राइस पब्लिकेशन, फॉर एग्जांपल सेबी ने सेबी जो है वो बहुत सारे प्राइस पब्लिकेशन निकालती है. कमोडिटी मार्केट कोटेशंस, पब्लिश्ड अकाउंट्स जो हम लोगों को मिल जाते हैं वेबसाइट से. पब्लिक अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बहुत बहुत बड़ा सोर्स ऑफ डाटा है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन. कि आपकी इंडस्ट्री में आपसे रिलेटेड जो भी दूसरे बिजनेसेस हैं, तो उनका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उनका ओवरऑल टर्नओवर क्या है, ये डाटा पब्लिक डोमेन पे बहुत सारी कंपनीज का अवेलेबल है. एंड देन देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल व्हिच कंपाइल दीज डाटा. ये सारे डाटा को वो सॉफ्टवेयर जैसे कैपिटल लाइन और प्रोवेस, these are certain softwares which basically compile all these data which are relevant for TP purpose, only for TP purpose, है ना. उसमें वो टर्नओवर क्या है, उसका टोटल ओवरऑल कॉस्ट क्या है, ग्रोस मार्जिन क्या है, नेट मार्जिन क्या है. क्योंकि अल्टीमेटली आपको जब मान लो रीसेल प्राइस मेथड है, तो ग्रॉस मार्जिन की जरूरत है ना, नेट मार्जिन की जरूरत है, नेट प्रॉफिट की जरूरत है जब आपको एनएमएम टीएनएमएम यूज करना है ना. तो वो सब कंपैरेबल स्टडी करने के लिए आपको कोई कंपैरेबल एसएससी चाहिए होगा ना, कंपैरेबल कंपनी चाहिए होगा. तो ये कह रहे हैं कि साहब आप उनके पब्लिक अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो पब्लिक अकाउंट्स है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनसे भी आप कंपेयर करके और ओवरऑल बेसिस पे ये सब डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो. तो दिस इज अगेन वेरी वेरी रेलेवेंट डाटा. तो आप जब मान लो अपने कंपनी को कंपेयर करोगे, तो यू विल फाइंड दैट देयर आर 200 कंपनीज जो कि आपके कंपैरिजन में आई थ्रू दैट सॉफ्टवेयर. फिर वो 200 कंपनीज में कौन सी 5, 7, 10 कंपनीज है विच आर रेलेवेंट फॉर यू, विच आर एग्जैक्टली कंपेरेबल विद यू और somehow somewhat comparable with you, वो आप निकालिए. और वो निकालने के बाद में देन यू नीड टू मेक दी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स. टीएनएमएम करना है, सपोज उसके यहाँ 10% नेट प्रॉफिट आ रहा है और आपको लगता है कि नहीं साहब मेरे यहाँ तो 10 नहीं 9 ही आना चाहिए, 8 ही आना चाहिए, ये मेरी वजह है. तो उसके बेसिस पे आप अपना टीएनएमएम कैलकुलेट करिए, या उसके बेसिस पे आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करिए. दीज आर द रीजंस दैट व्हाई माय ग्रॉस प्रॉफिट इज लोअर, माय नेट मार्जिन इज लोअर. तो वो रीजंस को आप डॉक्यूमेंट करें. तो ये कंपेयर, सो these आर वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन. और ज्यादातर जगह ऊपर वाली तो डेफिनेटली वो रिकॉर्ड भी तो होता ही है, बट ये जो पब्लिक अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला डॉक्यूमेंट है, ये बहुत ही कंपैरिजन के लिए बहुत ही रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है which we should take for the purpose of TP documentation. Next. The agreements and contracts enter into with the associated enterprise or with unrelated enterprise in respect of transactions similar to the international transaction or specified domestic transactions.
Now the segmented financial एक ही statements कंपनी में आपका मिलते हैं। अलग अलग लोगों से कर रही है, तो उनके एग्रीमेंट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, तो उसको आपको समझ पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि यार दीज आर द फैक्टर्स which are being considered for determining a particular price. जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ना कि भाई ये इसलिए इन्होंने इस पर्टिकुलर कंसर्न से तो कम प्राइस ज्यादा चार्ज किया है और इसे ज्यादा चार्ज किया। तो मेंशन दोस फैक्टर्स कि साहब ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है, उससे एविडेंट है कि इससे हम क्यों कम चार्ज कर रहे हैं। एंड इट इज ऑल अबाउट नॉट ओनली अबाउट सेल्स। मैं बार बार आपको जो हम सेल कर रहे हैं या जो हम रेवेन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द एई उसका एग्जांपल दे रहा हूं। रिवर्स इज द केस फॉर परचेजेस, रिवर्स इज द केस फॉर एक्सपेंस और एनी अदर ट्रांजैक्शंस। आपने किसी को लोन दे रखा, उससे इंटरेस्ट इनकम ले रहे हो या आप इंटरेस्ट दे रहे हो, वहां पे भी तो टीपी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, लेटर्स एंड अदर कॉरेस्पॉन्डेंस सेगमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये कैसे काम आ सकता है। अब कोई कंपनी है जो डाइवर्सिफाइड उसमें है ना, देयर आर 10 सेगमेंट्स और आप केवल एक ही प्रोडक्ट में काम करते हो, यू हैव ओनली वन सेगमेंट और उसमें वो कंपनी काम कर रही है, तो उस कंपनी की सेगमेंट इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है ना। और आपकी सेगमेंट इंफॉर्मेशन, आप 10 अलग अलग जगह काम कर रहे हो, है ना, और तो ओवरऑल बेसिस पे हो सकता है कि आप नहीं निकाल पाओ, तो फिर आपको सेगमेंट वाइज देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अपन 10 प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं या 10 अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं या अलग अलग अपने सेगमेंट्स हैं और सबका एक साथ जीपी निकाल के एनएम, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। तो वो कहते हैं कि आप फिर सेगमेंट वाइज देखिए, तो वो रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट, letters and other correspondence documents, any terms negotiated with the SSC, for example मेल के थ्रू हमने एसएससी और एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ कोई नेगोशिएशन किया हो तो वो डॉक्यूमेंट्स, और अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे हो सकता है हमने कोई बिल भेजा हो या वाउचर, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स व्हिच अफेक्ट द ट्रांजैक्शन, है ना, आपस में जो भी करस्पॉन्डेंस हुई है उसकी वजह से जो भी नेगोशिएशन आपका हुआ, दैट may show that yes you have arrived at the arm's length price. Yes, next. now next is the contemporaneity of data. इसमें एक आ गया है कि फॉर एग्जांपल किसी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हो रहा है फॉर मोर देन वन प्रीवियस ईयर, तो हम लोगों को फ्रेश डॉक्यूमेंटेशन हर साल मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती सेपरेटली, until unless there is any significant change in the nature of the terms of the international transaction या फिर प्राइसिंग में कोई चेंज आया है, तो हम लोग को जरूरत नहीं है कि हम लोग हर साल फ्रेश डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें रिगार्डिंग दैट ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट चेंज आया है विद रिगार्ड टू द प्राइसिंग और एनी अदर नेचर में चेंज आया है, टर्म्स में कुछ चेंज आया है, तो हम लोगों को फ्रेश डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो दिस इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जो हमने अभी तक पढ़ी है, ये सब हमको मेंटेन करनी पड़ेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। नाउ व्हाट इज मास्टर फाइल? So as this guidance note is about section 92E, तो उसने मास्टर फाइल के बारे में इतना कुछ तो नहीं कहा, बट master file provides a global overview of the enterprise transfer pricing, and it includes the high level information about the company's global operation and the transfer pricing policy. Now every person being a constituent entity of international group shall if the consolidated group revenue of the international group of such person is of which such person is a constituent entity as reflected in the consolidated financial statements of the international group exceeds rupees 500 crores, and the aggregate value of the international transaction during the accounting year as per the books of accounts exceeds rupees 50 crores, or in respect of purchase, sale, transfer, lease or use of intangible assets during the accounting year exceeds rupees 10 crores. तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मेंटेन करने पड़ते हैं। तो अपन इसको वापस रीड करते हैं कि अगर कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू जो है इंटरनेशनल ग्रुप का, जिसकी असेसी एंटरप्राइज जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है,
as per the consolidated financial statement of that international group. अगर 500 करोड़ से exceed कर जाता है या फिर जो aggregate value of the international transaction है during the accounting year as per the books of accounts of assessee exceed कर जाती है 50 करोड़ को, और अगर इन दोनों में से एक भी condition satisfy हो जाती है in respect of purchase, sale, transfer या lease, intangible property जो है वो exceed हो जाती है 10 करोड़ को, तो उन लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. लिस्ट ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ द इंटरनेशनल ग्रुप अलोंग विद देयर एड्रेस. मान लो कि इंटरनेशनल ग्रुप में बहुत सारी एंटिटीज होगी, फॉर एग्जांपल जैसे तुम लोगों ने बोला था कि रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, तो उसमें भी बहुत सारे इंटरप्राइजेस है, तो उन सबकी नेम, उनके एड्रेस, लीगल स्टेटस देना पड़ेगा अपने को कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी का, एंड द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर इंटरनेशनल ग्रुप, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप की इंटरनेशनल ग्रुप कौन सा बिजनेस कर रहा है, किस इंडस्ट्री में वो बिजनेस कर रहा है, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस और बिजनेसेस, इंपॉर्टेंट प्रॉफिट ड्राइवर्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस एंड बिजनेसेस. Also the list of entities of the international group which are engaged in development and management of intangible property और उनके addresses. The list of all the important intangible property and the groups of intangible property owned by such international group along with the names and address of the group entities that legally own such intangible property. For example कि इंटरनेशनल ग्रुप है, उसकी बहुत सारी इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज होगी, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स फॉर एग्जांपल, तो उनको जो ओन करता है उस इंटरप्राइज की डिटेल्स भी हम लोगों को देनी पड़ेगी. A list and the brief description of the important agreements among the members of international groups relating to intangible property, and the detailed description of the transfer pricing policies of international group related to research and development and intangible property. तुम्हारी स्लाइड्स आगे नहीं जा रही है, इस पे वही आ रही है मास्टर फाइल वाला. Now the description of the important transfers of interest in intangible property. For example, उन्हें interest transfer किया हो intangible property में, तो उसकी details उनको देनी पड़ेगी. मान लो कि इंटरनेशनल ग्रुप की एक इंटरप्राइज से दूसरी इंटरप्राइज में उन्हें इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हो, तो उन लोगों को वो डिटेल्स देनी पड़ेगी, नेम और एड्रेस देना पड़ेगा बाइंग और सेलिंग एंटिटीज का. डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स कि उन्होंने फाइनेंस कैसे अरेंज कर रखा है, फॉर एग्जांपल लोन्स ले रखे होंगे, बॉन्ड्स इशू कर रखे होंगे, तो वो सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी. और टॉप 10 लेंडर अनरिलेटेड लेंडर्स के नेम और एड्रेसेस देने पड़ेंगे. लिस्ट ऑफ ग्रुप एंटिटीज दैट प्रोवाइड सेंट्रल फाइनेंसिंग फंक्शंस including their place of operation and effective management. A detail of description of the transfer pricing policies of the international group relating to the financing arrangements. A copy of the annual consolidated financial statement. Annual CFS की हम लोग को कॉपी देनी पड़ेगी of the international group. The list and description, brief description of the existing unilateral advance pricing agreements and other tax rulings. Now the information and documents specified under sub-rule 1 shall be furnished to the joint director in form number 3CEAA on or before the due date for furnishing the return of income. Also, the constituent entity shall furnish Part A of form number 3CEAA even if the conditions specified in sub-rule 1 are not satisfied. And this is the format of form 3CEAA. Which require it is in part A, which requires the name of the assessee, address of the assessee, the PAN number or the Aadhaar number, name of the international group of which the assessee is the constituent entity, address of the international group, accounting year for which the report is being submitted, number of constituent entities
of the international group which are operating in India. For example, international group में तो बहुत सारी companies होगी, लेकिन जो operating in मतलब जो operate करेगी इंडिया में से उसकी details देनी है. Now the permanent PAN number, Aadhaar number, and this is the specimen of the table which is required to be given. So basically, ये जो form है, that is audit report. So far as documentation का form है, वो कोई specific अलग से mention नहीं है, but वो कहीं ना कहीं आपको पूरा एक documentation उसको रखना पड़ेगा, और उसी के basis पे auditor जो है वो अपनी report बनाएगा in the form 3CEAA, है ना. तो ये इसके अंदर अगर अपन देखें तो वही उसी तरीके से वापस आ गया डिटेल्स, एंटरप्राइज की डिटेल्स, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, है ना. पार्ट बी इज रिलेटेड टू वेरियस एंटिटीज डिटेल्स, एंड देन पार्ट सी इज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन डिटेल्स. एक बार आप यस, ये सारे ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स, सॉरी पार्ट बी में ही आगे सारे डिटेल्स, एंड देन आर्म्स लेंथ प्राइस से रिलेटेड डिटेल्स जो भी अपन ने डिस्कस किया. सो ए डिटेल्ड फॉर्म इज देयर हैविंग अराउंड 14 पॉइंट्स व्हिच नीड टू बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर्स. तो इसके बारे में कभी अपन बाद में बात करेंगे, वन बाय वन क्लॉज एग्जैक्टली रिपोर्टिंग कैसे होती है. Now Jayesh will continue. Thank you. Good afternoon, everyone. Till now, we have studied the provisions of the transfer pricing, the methods, the documentation, and all. Now we are going to study what will be the penalty if there is non-compliance of those rules. So, to ensure the compliances with regards to transfer pricing provisions, various penalty provisions are provided in the law. First scenario: penalty for concealment of income or furnishing inaccurate particulars thereof. So the penalty would be a sum which shall not be less than, but which shall not exceed 3 times the amount of tax sought to be evaded by concealment of particulars of his income or the furnishing of inaccurate particulars of such income. मतलब मैंने अगर गलत इनकम मैंने रिपोर्ट करी है तो उसकी वजह से मैंने जितना टैक्स इवेड किया है कम से कम उतना और मैक्सिमम उसका 3 टाइम्स, वो मेरी पेनल्टी होगी. कितनी पेनल्टी? 300% of tax ought to be avoided. Yes, that is the maximum. तो जो असेसिंग ऑफिसर है ना वो मैक्सिमम ही लगाता है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो मैक्सिमम वाला ही है, उसके बाद फिर आप कम कराते हो. सो हैविंग सेड दैट, हम ये पेनल्टीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज वी शुड नो द ग्रेविटी ऑफ द प्रोविजंस, वी शुड नो द ग्रेविटी ऑफ द टीपी डॉक्यूमेंटेशन, कि अगर यहाँ आपका प्रॉपर नहीं है तो आगे जाके और एसएससी को पेनल्टीज लग सकती है, विच आर हैवी पेनल्टीज, है ना, which are in percentage of the turnover. एक जो कि penalties है ना, वो बताएंगे और क्या penalties है. So in order to avoid the penalty, the assessor is required to prove that he has acted in the good faith and with due diligence. And if it is so proved, then the addition or disallowance shall not be deemed to represent concealed income, furnishing of particulars of income. मतलब जो assessee है उसके ऊपर burden है कि वो prove करे कि उसने जो information disclose करी है वो true and fair है. Next is penalty for under-reporting and misreporting of income. So the penalty would be 50% of the amount of tax payable on the under-reported income. Further, the under-reported income shall not include the amount of under-reported income represented by the addition made in conformity with the arm's length price determined by the transfer pricing officer, where the assessee had maintained the information in documents, declared the international transaction, and disclosed all the material facts relating to the transaction. The penalty is 50% of the amount of tax payable on the under-reported income. And in under-reported income, जो amount transfer pricing officer ने add किया है arm's length transaction को ध्यान में रखते हुए, वो add नहीं होगा. Or where the under-reported income is in consequence of any misreporting, then the penalty shall be equal to 200% of the amount of tax payable on the under-reporting income. Penalty for failure to maintain the information and documents in respect of international transaction or specified domestic transaction.
If any person in respect of an international transaction or specified domestic transaction fails to keep and maintain prescribed documents and information, fails to report any such transaction which is required to be reported, or maintains or furnish any incorrect information, then the assessing officer or commissioner may direct that such person shall pay by way of penalty a sum equal to 2% of the value of each international transaction or specified domestic transaction entered by such person. So अगर assessee proper information on documents maintain नहीं कर रहा है किसी भी international transaction के specified domestic transaction के, the penalty would be 2% of the each value of international transaction or specified domestic transaction. Further, the section 271AA subsection 2 inserted by Finance Act 2016 prescribed penalty for failure to furnish master file by the prescribed due date as ₹5 lakh. Master file जो अभी आयुषी ने बताया था, अगर वो ड्यू डेट पे असेसी फाइल नहीं करता है तो उसकी पेनल्टी ₹5 लाख है. Penalty for failure to furnish a report under section 92E. Section 271BA provides that if any person failed to furnish a report from an accountant as required by section 92E, what is required under section 92 is report from an accountant to be furnished by the persons entering into the international transaction. The assessing officer may direct that such person shall pay by way of penalty a sum of ₹100,000. Penalty for failure to furnish information or document under section 92D. If any person who has entered into an international transaction or specified domestic transaction failed to furnish information or document, then the assessing officer or the transfer pricing officer or the commissioner will direct that such person shall pay by way of penalty a sum equal to 2% of the value of international transaction or specified domestic transaction for each such failure. Same penalty what we have studied earlier. Penalty for failure to furnish information or documents under section 286. So there are different natures. First is failure to furnish the prescribed report required to be maintained by the India parent entity or alternate reporting entity in India of the international group, where the period of failure is equal to or less than 1 month, the penalty would be 5,000 per day. Period of failure if greater than 1 month, then 15,000 per day. And continuing default after service of penalty order, then the penalty would be 50,000 per day. So अगर assessee जो इंटरनेशनल ग्रुप है उसकी पेरेंट एंटिटी इंडिया में या फिर पेरेंट एंटिटी इंडिया में नहीं है लेकिन इंडिया में जो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं वो अगर रिपोर्ट करने में अगर एक तो इससे कैमरे से ज्यादा दिखेगा. चश्मा लगाने की जरूरत है तेरे को दिख रहा है पढ़ने में आ रहा है तेरे को सबको अच्छा ऐसे ठीक है मुझे लगा क्या बता तेरे को आंखों के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ जाए ठीक है. Where the period of failure is equal to or less than 1 month, the penalty is 5,000 per day. If greater than 1 month, then 15,000. And if the penalty order has come in, still the default is continued, then the penalty would be 50,000 per day. And if any inaccurate information particulars have been furnished, then the penalty would be ₹5 lakh. And if the assessee has incurred failure to produce the information and documents within 30 days, then the penalty would be 5,000 per day up to service of penalty order. And these 30 days could be extendable by more 30 days. And in that period, the penalty would be 50,000 per day. Next is penalty for furnishing incorrect information in reports and certificates. If an accountant or a merchant banker or registered valuer furnishes incorrect information in a report or certificate under any provisions of the Act or the rules made thereunder, the assessing officer or the commissioner may direct him to pay a sum of ₹10,000 for each such report or certificate by way of penalty. So if an accountant, merchant banker, or registered valuer has furnished any incorrect information or made a false certificate, then the penalty would be ₹10,000 for each such certificate made by the accountant or the concerned person. तुमने इस पे शेयर नहीं किया क्या? बाकी लोगों के आ रहा है उसको किसी पूछना आ रहा है विजिबल है नहीं इस पे
चल ठीक है, कंटिन्यू। आ रही है ना? ठीक है, फिर मेरे इश्यू है यार, इंटरनेट का कुछ चल रहा है। मोबाइल पर काम कर कंटिन्यू। So what would be the immunity from the imposition of penalty? Assessee can make an application to the assessing officer to grant immunity from the imposition of penalty where the assessee had paid the tax and interest payable as per the order of the assessment or the reassessment within the period specified in the notice of demand and no appeal against the order has been filed. The application should be made within 1 month from the end of the month the order has been received and shall be made in such form as may be prescribed. तो असेसिंग ऑफिसर हो, असेसी अगर चाहते हैं कि उसके मतलब वो अगर ये सोचता है कि उसके ऊपर जो पेनल्टी लगी है वो गलत है, तो असेसिंग ऑफिसर के पास विद इन 1 मंथ जाके ये बोल सकता है, बट प्रायर टू दैट ही हैज टू पे द टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज पर द ऑर्डर एंड ही शुड नॉट फाइल एनी अपील अगेंस्ट द ऑर्डर relevant. So the next topic is scope of examination under section 92E. Report under section 92E. Scope of examination by whom? By auditors, है ना? 92E में रिपोर्ट कौन दे रहा है? टीपी रिपोर्ट कौन दे रहा है? ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो ये वहां बात कर रहे हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 92E। आपका क्या स्कोप है ऑडिट करते हुए, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। Every person who has entered into an international transaction or specified domestic transaction during a previous year shall obtain a report from an accountant and furnish such report on or before the specified date in the prescribed form duly signed and verified by an accountant. So the report is to be given by an accountant in the form number 3CEB as prescribed under the rule 10E. The income tax rules have been amended. Sorry, वो जो पहले फॉर्म था that was 3CEAA, that was by the, हाँ वो मैं गलत बोल गया उस वक्त, that was 3CEAA to be given by the assessee. Now it is 3CEB to be given by the auditors. Yes. The report is to be given by an accountant in the form number 3CEB as prescribed under the rule 10E. The income tax rules have been amended to require the filing of the said report to be done electronically. Further, the accountant has to give his opinion whether the proper information and documents are as are prescribed have been kept by the assessee in respect of international transactions or specified domestic transactions entered into by him. Report by the accountant. The report consists of the 3 paragraphs with the distinct aspects. Basically, the form 3C consists of 3 paragraphs. The first paragraph contains declaration about the examination of the accounts and records of the assessee in order to review the international transactions and specified domestic transactions. फर्स्ट पैराग्राफ में तो जो ऑडिटर है या अकाउंटेंट है जो रिपोर्ट बना रहे हैं उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि उसने सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो है उसको वेरीफाई कर दिया है कि वो सही है या नहीं. The second paragraph involves rendering of an opinion whether proper information and documents as are prescribed under Rule 10D are maintained by the assessee in respect of the identified international transactions and the specified domestic transactions on the basis of details furnished in annexure to form number 3CEB. And the third and the last paragraph requires expression of the opinion whether particulars given in the annexure form into the form 3CEB are true and correct. Maintenance of proper information in documents. So the expression accounts and records appearing in the report should normally refer to those accounts and records which are examined solely in relation to the international transactions and specified domestic transactions entered into by the assessee during the relevant previous year. मतलब ऑडिटर्स पूरे अकाउंट्स चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस है उन्हीं को चेक करेगा. The accountant should obtain from the assessee a complete list of accounts and records maintained by him, both financial and non-financial records, and identify those that need to be produced before him for examination. He should further obtain suitable representation as regards the completeness of the accounts and records from the assessee. So auditor जो है वो जितने भी accounts and records है सब के डिमांड कर सकता है और उसको एडिशन में भी कुछ चाहिए तो वो भी वो assessee से मांग सकता है.
where the certifying accountant is not the statutory auditor of the assessee, he should take the precaution of clearly stating in his report that the figures from the audited general purpose financial statements have been used and relied upon. The accountant may obtain a written representation from the assessee on the reconciliation between the figures appearing in his report and the figures appearing in the general purpose financial statements. तो जो रिपोर्ट बना रहा है फॉर्म 3CEV में, अगर वो फॉर्म का स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है तो वो उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन लेगा assessee से कि जो फिगर्स मैं अपनी रिपोर्ट में लिख रहा हूँ और जो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो सही है और वो जिसने उसके ऑडिट करी है स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसके वर्क पे रिलाई करेगा और वो अपनी रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन करेगा कि दैट आई हैव रिलाइड अपॉन द वर्क ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. The accountant is required to give his opinion on the assessee's compliance with the documentation requirements prescribed under Rule 10D. The accountant should review the documents and records pertaining to international transactions and specified domestic transactions of the assessee and compare the same with those prescribed under Rule 10D to form an opinion. If an accountant is satisfied that the specified records are properly maintained, then the certification may be done without any qualification. अगर उसको सब सही लगता है तो वो true and fair report दे देगा without any qualification. If any document is not maintained or any qualification or a note as part of emphasis on matter paragraph is given in the financial statements by the statutory auditor of the assessee, then the accountant should suitably qualify his report or disclose the same in his report depending upon the facts and circumstances of each case. अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी एम्फेसिस ऑन मैटर दे रखा है या फिर कोई क्वालिफिकेशन दे रखी है तो ये जो अकाउंटेंट रिपोर्ट बना रहे हैं फॉर्म 3CEV की वो भी अपने रिपोर्ट में वो सब मेंशन करेगा. एंड अगेन द असेसिंग in whose case the aggregate value of international transaction as recorded in the books of accounts does not exceed INR 1 crore in aggregate, then there is a relief from maintaining the specified information and documentation. जो लिमिट अपन ने पहले भी पढ़ी थी 1 crore की सेम. Certification regarding particulars in annexure. The particulars required to be furnished under Section 92E are given in the annexure to this form, and whether in the accountant's opinion and to the best of his information according to the explanations given by him, they are true and correct. So annexure to form 3CEB we will be covering further. The accountant must limit his scope of work and review the procedures to the extent certified in the form number 3CEB. मतलब जो फॉर्म में लिखा है अपन सिर्फ उतना ही काम करेंगे उसके एक्स्ट्रा में नहीं. For example, in the annexure, the method which has been used to determine the arm's length price need to be stated. In this context, the accountant is only required to ensure that the method stated as being used to determine the arm's length price by the assessee has actually been used, and it is not the accountant's responsibility to ensure that the method so used is most appropriate as prescribed by the board. मतलब अगर annexure में लिखा है कि हमने so and so method use किया है तो हम ये देखेंगे कि उसी मेथड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग हुई है ना. हम ये चेक नहीं करेंगे कि वो मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट है या नहीं. वो अकाउंटेंट का काम नहीं है. तो अदर एस्पेक्ट्स आर ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 3CEV. So CBDT has made it mandatory for enterprises to file their form 3CEV online with view to make the process faster and less error prone. The assessee thereafter at his discretion may consider filing the form 3CEV along with the notes applicable to the relevant clauses or annexure to form 3CEV with the Indian Tax Department to support the position adopted while filing form number 3CEV online by an accountant. मतलब एक बार अपन फॉर्म 3CEV है जो ऑनलाइन फाइल करते हैं उसके बाद अगर असेसी चाहता है तो एट हिज डिस्क्रिप्शन वो उसके फॉर्म 3CEV के जो भी एनेक्शर्स है या जो भी रेलेवेंट क्लॉज है वो जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकता है. Form 3CEB in case of permanent establishment of an overseas enterprise. In case of a permanent establishment of an overseas enterprise, the clauses of Rule 10D subclause 1 would apply to the extent relevant. Data which is not relevant may not be required to be maintained. The accountant should rely on his professional judgment to verify the relevance and extent of details available with the permanent establishment as Rule 10D Rule 1 in order to establish the arm's length price. मतलब अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है ओवरसीज एंटरप्राइज का तो अपन जितना एक्सटेंट रेलेवेंट है उतना ही रिपोर्ट करेंगे उससे ज्यादा नहीं. तो पी के केस में क्या होगा कि वहां पे जैसे शेयर होल्डिंग किसी की नहीं होगी
because P is not a company. तो वो उसका केवल यहाँ पे ब्रांच ऑफिस ही है, तो बहुत सारी चीजें उसके ऊपर नहीं लगेगी. So you need not to maintain those things. So here is the format of Form 3CEB. Report from an accountant to be furnished under Form Section 92E relating to international transactions and specified domestic transactions. So what we have studied earlier, there are 3 paragraphs. इन्होंने बताया ना क्या क्या पैराग्राफ होते हैं, तो वो इसका पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है. एंड देन नीचे अनेक्सर भी तो होगा. Annexure. अच्छा, जतिन इज कवरिंग द अनेक्सर. ठीक है. So thank you. Now Jatin will take over. So Jatin, you are listening all of us? Jatin, you can share your screen now. Yes, sir. Yes. Yes, And sir, you I'm can audible, also, sir? yeah, you are audible. You can also on your video. Yes, sir. So you are able to share, Jatin? Yes, sir, I'm trying, sir. Sir, is the slide visible? Can you please go share the PPT, in fact, presentation, PowerPoint show, slide show? Yes, yes, sir. Now is it visible, sir? Yes, visible. It is visible. You can continue with your presentation now. Yes, sir. So, good evening, everyone. Myself, Jatin, and I have prepared a presentation to guide us through the discussion and help us better understand to form number 3CEB. So, let's get started. First of all, we should know the general principles for preparing the annexures. We should firstly rely on the judicial pronouncements before taking any view about inclusion or any items and which to be furnished specified clause. Secondly, in case of any conflict of judicial opinion, we can refer to the view which has been followed in any specified clause. Thirdly, we should also follow the accounting standards as well as the guidance notes with the standards on auditing as well of the institute. Now, the things which should be considered to verify the truth and correctness. Jatin, come to the previous slide. Come to the previous slide. Yes, sir. तो ये क्या कह रहे हैं कि आपको जब भी आप टीपी डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हो, तो ये 3 चीजें जो है जनरल प्रिंसिपल्स आर देयर व्हिच यू नीड टू कंसीडर. वन इज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, है ना, क्योंकि बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस के इश्यूज आते हैं. आप लोगों ने देखा होगा ना, जब अपन ने केस स्टडीज करी तो कितने सारे इश्यूज आते हैं, है ना. और कई बार हम किसी क्लॉज को प्रॉपर्ली इंटरप्रिटेशन उसका हम नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे केस में
उसका जो जुडिशियली इंटरप्रिटेशन किया हुआ है वो हमें ध्यान होना चाहिए। तो हमें वो कंसिडर करना चाहिए कि अच्छा ये यहाँ ये बात लिखी हुई है, थोड़ा कुछ एम्बिग्यूटी है, तो कोर्ट ने इसके लिए क्या कहा है, so that you should consider for the purpose of this transfer pricing. Then another is, in case of conflict of judicial opinion on any issue, he may refer to the view which has been followed while giving the particulars under any specified clause. कि वो उन views को देख ले। And accounting standards, guidance notes, they are also relevant. क्योंकि वो accounting क्या कर रहा है, basis those accounting standards, guidance notes. तो ये सब बातों को आपको कंसीडर करना चाहिए whenever you are going for a DP documentation. Next slide, Jatin. Yes, sir. Now, the things we should consider to verify the truth and correctness of particulars. So first of all, we should cross-refer items if it is covered in number of clauses. Then if there is a difference of opinion between accountant and our SSC, then we should consider both the viewpoints. In case of any non-applicability, it should be clearly stated in our annexures. And by examining the particulars in the annexure, the accountant also should keep in view the law applicable for the applicable year. The information in for the relevant year. The information in the annexures should be based on our books, accounts, records, documents, information, and explanation made available to the accountant for his examination. The annexure should be sent by the accountant after he has completed his procedures. Of all the particulars given to be given in the annexure. Annexure to form number 3CEB contain 3 parts and 25 clauses. So ये ऊपर वाला सवाल ना, जो एक बार पहले वाली स्लाइड पे वापस आओ। Yes. तो ये बिल्कुल आपके टीपी ऑडिट से रिलेटेड एक क्विज हो सकता है सीए फाइनल का, कि आपका प्रोसेस ऑफ ऑडिट क्या होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिटिंग व्हाइल फाइलिंग द फॉर्म 3CEB। तो ये पूरा बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा हुआ है कि आप सारे क्लॉजेस को क्रॉस रेफरेंस करो। ऐसा तो नहीं है कि आप एक क्लॉज में कुछ और लिख रहे हो और वही बात दूसरे क्लॉज में कुछ और लिख रहे हो, क्योंकि ये तो इतनी सारी चीजें ना, अपन 3 क्लास में देख रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है। तो अगर कोई पहली क्लास में कुछ और पढ़ाया और इस क्लास में अपन उसी के बारे में कुछ और बात करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिमिलरली जो क्लॉजेस हैं क्रॉस रेफरेंसिंग होनी चाहिए। अगर कोई बात किसी और क्लॉज में लिखी हुई है तो उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्लॉज जो इफेक्ट हो रहा है तो वहां पे भी आपने, ऐसा तो नहीं है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लिख दिया। जो क्लॉजेस एप्लीकेबल नहीं है वो आपको नॉट एप्लीकेबल लिखने चाहिए। सो दैट very important things to do have been specified in this particular slide by Jatin. Next, Jatin. Yes. So our annexures contains 3 parts and 25 clauses. So let's discuss first part, part A, which have the first clause, which where we have and examine under section 92E. In case of a branch, the name of the branch should be given. The second clause is the address. The address is to be mentioned. We have given to our income tax department for assessment purposes as on the date of signing of the form. Third clause requires to mention PAN number. If there is no PAN number, then the general index register number is available, which may be given. Fourth clause is the nature of business or activities of the assessee. It should be as per the instruction for filing form number ITR 6. Fifth clause is the status. Status refers to the different classes of assessees included in the definition of person in section 2 subsection 31 of the act. It includes individual, HUF, company, firm, an association of person or a body of individuals, authority, artificial judicial person. Also, a person has been defined as including a permanent establishment of such person. That is even a branch or a project office.
If there is any disputes regarding the status, the facts of it should be mentioned very clearly. Sixth clause requires to mention the previous year ended. Seventh requires the assessment year, which should for which the account should be examined. Eighth and ninth clause requires aggregate value of international transactions and specified business transactions as per books of accounts. So it includes the aggregate value of international transactions and specified domestic transactions. I think transactions which are or equal to 20 crores. So now it's part B of the annexure, which have the first clause number 10, in which we have to provide the list of associated enterprises with whom the assessee has entered into international transaction with the following details. It requires to mention the name of the associate enterprise, nature of the relationship with the enterprise. It's a description of the business, a complete list of all the associated enterprises which person with whom the assessee has entered into international transactions during the previous year. If an enterprise was associated with the assessee for a part of the one can rely on the register maintain the list of the transactions and the relevant details. In this, the accountant should examine on test check basis from an instrument or agreement or any other document evidencing the association of associated enterprises, including it can include supplementary documents related thereto. In this connection, the accountant has to make his judgment and determine the sampling approach and design the nature and timing of the audit test. In preparation of the list for the associated enterprises, it is possible that sometimes the extent of association may not be precisely ascertainable. So in that case, in such circumstances, it is advisable to consider the viewpoint of both assessee and the accountant's perspective, and its facts should be stated in the annexure or in the notes, as the case may be. If considered significant in the accountant's report as well. In certain cases, the enterprises may be associated in more than one manner. Since there is no different treatment for any particular form of association, it may be sufficient if the assessee details any particular relationship. Although the assessee should provide all the relationship details, disclose of any one relationship is considered sufficient from a compliance perspective as well. Now the clause number 11. To provide details related to transaction of tangible property. So here you should know that international transaction, which is an aspect of purchase, sale of raw material, consumables, or any other supplies for assembling, processing, manufacturing of goods, articles from or to associated enterprises. If it's yes, then provide the details in respect of the associated enterprises or each transaction or class of transaction. It includes the name and address of the enterprises, description of the transaction, total amount paid or receivable. It should be as per books of account or as per computed by the assessee as per the arm's length price. Method for determining the arm's length price should also be stated. The items referred in this clause are also to be clause 11A. It's but purchase जतिन, if yes sir. आपकी वॉइस शायद थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है.
तो अभी कितनी स्लाइड्स Yes, बची हुई है? yes. Sir, हम्म आपके कितनी स्लाइड्स बची हुई है? ओ 18 स्लाइड्स बची हुई 15 है। slides. Yes, sir. सो व्हाट यू कैन डू इज, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू ये आ रहा है कि आपकी Sir. वॉइस नहीं आ रही है, तो आई वुड जस्ट समराइज विद देम कि क्या है ना, एंड देन वी आर कंक्लूडिंग फॉर द डे, Yes, क्योंकि sir. हाँ, इसको बड़ी खुशी हो रही है। Sir, actually, here network issue is there, sir. So we are concluding here, but in nutshell मुद्दा ये है कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट आप बना रहे हो, है ना, जो अपन ने जितना भी डिस्कस किया अभी तक रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, तो उसको वापस ऑडिटर्स को रीअफर्म करना है और ये बताना है अगर कोई डेविएशंस है तो अल्टीमेट रिजल्ट इज डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से प्रॉफिट कुछ और हो सकता है, ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट के दौरान उसके एडजस्टमेंट्स कुछ हो सकते हैं, which assessing officer, which auditor need to recommend, and then how much is the limit for not 1 crore in terms of variation. I think 3% is the limit कि आपका 3% प्रॉफिट और लॉस जो है वो ऊपर नीचे आ जाता है, तो then that can be ignored, है ना। तो जब ऑडिटर एक रिपोर्ट करेगा कि साहब ये इतना ट्रांसफर प्राइसिंग के दौरान इन्होंने जो इनकम है वो कम बताया है, तो वो एडजस्टमेंट उसको अपना रिटर्न फाइल करते हुए करना होगा। By the SSC that adjustment is required to be done, है ना। So with this, in fact, Jatin, if you don't have any issue, we can close. Or if you are able to talk properly, because we are not able to hear you properly here. So Sir, anyway, actually, here there are network issues, sir. So let's conclude over here, है ना। आप ये presentation अपना सब group में share कर लो, so that all can see this thing. Now we can start with the quiz, है ना, for which we all are waiting. और quiz के rules सबको पता है? So I am concluding here, and everyone who is attending have to also attend the quiz, or our coordinators will observe, और सारे क्विज आपको अटेंड करने, ऐसा नहीं है कि आपने 5-7 क्विज अटेंड कर लिए और आप बाहर निकल जाए।